that all constituents and links evolve in due course of time. They don't evolve all of a sudden. All constituents, biotic, abiotic factors, everything, they evolve in due course of time. They take time to evolve. They don't evolve all of a sudden. Suddenly, कि अचानक हो गया और सारे के सारे constituents एक ही बार में evolve हो गए. They evolve in a due course of time. And that due course of time, evolution passes via. There can be nth number of developmental stages, sere or seral stages. These evolution called succession that passes via several developmental stages can be demarcated as primary and can be demarcated as secondary. Primary is in lifeless habitat. Habitat की definition recall कर लो. Secondary is after destruction of climax community. That is the reason primary succession is comparatively slower. This is comparatively faster. This is always natural. This can have human element. हमने कोई forest fire की वजह से existing बायोम को खत्म कर दिया और उसके बाद उसका जेनेसिस होना शुरू हुआ तो आप उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं. When I talk about secondary succession or primary succession, we identify the development of ultimate which is possible in a given habitat. उसी को आप climax community बोलते हैं. आपको biotic community का definition. So जब भी आप evolution की बात करते हैं, you talk about succession. Things evolve. In a single go, it doesn't come out with the development. कि मेरे पास सारे insect, सारे reptile, सारे plant, all of a sudden evolve हो गए थे. That doesn't happen. It evolves. And that evolution can be demarcated as primary and secondary. Passing via these successions, what you have to understand is this. Preliminary stage, later seral stage. Just maintaining simplicity of the diagram. Environmental gradient. Number of, in due course of time, via developmental stages called sere or seral stages, there is diversity of specimen that tends to evolve. This diversity of specimen by default marks the multiplication of competition. Figure 1 is a single niche axis where I'm believing that my habitat has only one organism. So this organism which has got here extreme low temperature precipitation, extreme high temperature precipitation, nutrient, anything. So at the either edge, I have just put on the dot to it. I don't have any specimen there. It is beyond stress zone. So center where you have maximum number of specimen because it is optimum zone for it to survive. So that blue graph of the first figure is what we have repeated in the second figure. And what we are saying that this is my specimen which has got its geographical range of survival like this. And this is my specimen which is supposed to have its geographical range of survival like this. But my green specimen is weaker specimen. It was supposed to be existing in this big ball belt. But because it has to compete with a very strong specimen, what will happen? This area, it will leave and adjust on its survival just on this belt. Have you understood? Weaker specimen will adjust with its living space. This is called realized niche. This is Gauss's principle of competitive exclusion. Note, stronger specimen have a fundamental and realized niche as a same. My blue specimen. Note that my green specimen is a weaker specimen. Its fundamental niche is much bigger, but its realized niche is much smaller. Give me a confident go ahead class. Can be role niche, can be space niche. It can be anything. It is not just the role that I perform. Every organism performs certain role in ecosystem. That is the reason we talk about neutralism. So it's a myth when I say niche is the profession of an organism. Of course it is. We play certain role and that is my niche. But is niche only profession? No. Niche can be my food. You and me have got same feeding capacity. Think about it. Will ever lion and goat be competing with each other? No. Why? They have different feeding mode. Lion will compete with the other carnivores. Goat will be competing with the other herbivores. So we do have got the food niche and space niche is my diagram.
because environmental gradient which is favorable for me and favorable for you automatically will compete with each other. I'm inferior, so my realized niche will be lesser. Give me a confident go ahead. These are the fundamental constituents when it comes on to ecological study. Without that, you cannot get on to the understanding of done. Before we land on to the study of individual areas and the analysis, I just want to add one more thing quickly. This is also related to the fundamental thing. You are already aware of it. It's only that we are enlarging. When it comes to adaptation, and I purposefully avoided talking about it yesterday, we were already having quite a major adaptation factors. When it comes to adaptation, I'll talk about some more specification, but I just want to take it up here. Certain rules should be very clear with you. It's Allen's rule, it's Bergman rule. Generally, students confuses in it, and it is something that comes up as a throwaway marks question. So you should not be moving out of it. Okay? A round and compact body shape with less exposed limbs, cold climate. Thin, lean body shape with more exposed limbs. Colder climate animals are bigger body size. Think about polar bear. Colder climate will have thick hair and skin coat so that you can survive. Hand raise कर दो. I think it is something which is very evident. बस ये पता होना चाहिए कि Allen rule है, Bergman rule है और ये Wilson rule है. Loss and gain of heat is the function of surface area. More than 95% of organisms are conformers. Conformers fails to maintain homeostasis. So automatically, if I'm in colder climate, I'll not be finding small sized animals, because small sized animals will fail to survive the extreme grim conditions. Bergman rule says colder the climate, bigger the body size of the animals. Polar bear, Tibetan antelope, come on, yak, gazelle, give me confident, go ahead. I'm certainly not saying that big animals are not found in a warmer climate. Elephants are quite big animals, but remember, elephants are mammals and mammals are regulators. Andres, jaldi say. Allen's rule has got dual aspect. Bergman rule is about body size. So body size bigger, colder. Body size smaller, warmer. But I'm not saying that bigger body size cannot be in warmer, because I know that organisms can be regulators. Allen's rule is true. If I talk about the animals, imagine a camel. Camel has got the most evident body part as its long, tall legs. Reason, more the exposed limb, more I'm easing my body heat and I'm surviving. And if I now ask you to recall polar bear, it has got all its limb covered, because more exposed body part, more you are easing out your body heat. So shape is more rounded and compact, and the limbs are more covered when you are in colder climate, and it is more thin and lean, and it is more exposed when you are warmer climate. And Wilson rule says thick coating either of skin or of hair is typical to the colder climate, because I need to survive cold winters. I think this fundamentals of ecology done. Some of the elements, of course, will be applicable to the individual go, and will be handling that one by one. Now, what you have to take is, you have to take this study further and apply it to the real world. And when I apply it to real world, my first step of the beginning goes with Aquatic, because after taking terrestrial, I'll take you to India, so that will be easier. So aquatic, latitudinal आपको हम कल बता चुके हैं. With increase in sign of latitude, biodiversity decreases. Why with increase in sign of latitude, biodiversity decreases? Because sunlight availability will decrease. ठीक है? Regional का क्या मतलब होता है? Study of ocean को recall करेंगे. ये मेरा कोई भी hypothetical ocean है. ये मेरा 0 degrees है. Margins, that is near shoreline. Dual nutrient कहाँ से आ गया? Land का भी आ गया और water का भी है. Will be more productive. Margins will be more productive than open water. अब ये तो बहुत logic सा बात है कि open water is such big that total production तो by default open water का ही ज्यादा होगा. ये तो कोई कहने की बात है ही नहीं. Because when I try to compare the size, of the water bodies, imagine karo, margins of Atlantic Ocean versus the open Atlantic Ocean. So open ka total production to zyada hona hi hai. But when I talk about the margins, they have got higher because they have got dual nutrient. So latitudinally, you are decreasing the biodiversity and production with increase in sign of latitude. Regionally,
Margins are more productive compared to the open water. Are you giving me go ahead? Depth पर अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं. When I take up margins, margins is to be applied. So I'm writing margins again here. Margins are to be applied with two. Please recall, I mentioned it earlier, neritic and upwell. Neritic is continental shelf and upwell is with warm pycnocline water. तो warm pycnocline water कहाँ पर होता है? कौन सा बाउंड्री करंट कोल्ड होता है स्टूडेंट्स? कौन सा बाउंड्री करंट कोल्ड होता है? ईस्ट बाउंड्री की वेस्ट बाउंड्री? East boundary. East boundary current if is cold, then its pycnocline water will be warm and warm water will always upwell. Matlab when you are talking about margins as upwell, you know that you are in eastern margin and continental shelves can be anywhere. Margins are more productive and can have neritic shelf habitat or can have the upwelling habitat. ठीक है, दोनों में कौन कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं? डुअल न्यूट्रिएंट है, दोनों में सनलाइट अवेलेबिलिटी है, दोनों में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, एंड दैट इज द रीजन दे शुड गिव मी द सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिटी. बट इसमें बस एक चीज ऐड कर देना, शेल्व्स प्रोवाइड सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड. क्योंकि शेल्फ आप याद करो कि इज हैविंग द डेप्थ ऑफ नॉट मोर देन 200 मीटर्स. इट इज लेस देन 200 मीटर्स का डेप्थ. तो जितने भी बिग फिशेस हैं, प्रीडेटर्स हैं, वो तो अंदर आ ही नहीं पाएंगे. प्रीडेटर्स को नहीं आने देने की वजह से सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाएगा. इसलिए नेरेटिक हैबिटेट को अपवेलिंग हैबिटेट से ज्यादा डाइवर्स मानते हैं. इज दैट कंफर्टेबल? है तो दोनों ही मार्जिन. मान लीजिए एक बार कंपैरिजन में आ जाए एंड वी हैव एनकाउंटर्ड अ क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अमंग द गिवन हैबिटेट? तो भाई मार्जिन का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है. लेकिन मार्जिन के दो डायमेंशन है. तो प्रोडक्टिविटी में तो आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अपवेलिंग सबको बराबर लो, लेकिन डाइवर्सिटी में नेरेटिक हमेशा थोड़ा हाई रहता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑन द सेफर ब्रीडिंग ग्राउंड. इफ यू आर गिविंग मी गो अहेड, आई कैन कंटिन्यू फर्दर. अब हमें एक नई चीज पढ़नी है, ये है डेप्थ. When I talk about aquatic ecosystem, I have got depth as an important constituent, which was not possible for us to learn while learning the fundamental principles of ecology. So I know that every lake, every river is not having the depth. I'm taking maximum depth to understand the thing. So I'm by default landing onto the ocean, and then eventually I can apply it to the fresh water. So I want to learn depth. So let it be like this. So dimension number 3. When I take depth into account, सबसे पहली चीज हमें करनी है lifestyle. Based on lifestyles, habitat, and फिर habitat का variant. How many lifestyles aquatic ecosystem possess? How many lifestyles I can correlate with aquatic? एक को बोलते हैं प्लैंक्टोनिक, एक को बोलते हैं नेक्टोनिक और एक को बोलते हैं बेंथ. प्लैंक्टोनिक लाइफस्टाइल का मतलब है ड्रिफ्ट, नेक्टोनिक लाइफस्टाइल का मतलब है स्विमर्स और बेंथोस का मतलब है अटैच्ड, बेंथिक समथिंग व्हिच इज इन क्वाइट डीपर लोकेशन. जब आप ड्रिफ्टर्स की बात करते हो तो आप फाइटोप्लैंक्टन एंड जूओप्लैंक्टन दोनों की बात कर रहे हो. Nectons includes all the varieties of fishes, finfish, shellfish, every variety of fish, small fish, big fish, every. And benthos are attached in the deeper water, which incorporate different types of starfishes, sessile, motiles, etc. ठीक है. इसके अलावा आप लाइफस्टाइल से थोड़ा सा डेविएट प्लांट वेरिएंट्स में दो एग्जांपल्स और ऐड कर सकते हो. प्लांट्स तो ये शैलोअर हैबिटेट में होगा. एक को बोलते हैं पेरीफाइट्स और एक को बोलते हैं मैक्रोफाइट्स. पेरीफाइट्स कौन होते हैं? पेरीफाइट्स होते हैं, ये दोनों रूटेड प्लांट्स हैं. तो प्लांट्स विच आर रूटेड एंड माइंडेड, दे आर इनटू वाटर, दे आर नॉट ड्रिफ्टर्स, दे आर रूटेड. तो पेरीफाइट्स आर सबमर्ज. एंड व्हाट आर मैक्रोफाइट? पार्शियली इमर्ज. मतलब आई एम एक्वाटिक प्लांट, मेरा कुछ पार्ट तो पानी के नीचे रहता है, कुछ पार्ट पानी के ऊपर आता है. कमल का फूल. यस, अमित शाह विल बी वेरी हैप्पी विद माय स्टेटमेंट. So macrophyte is a very good example of my visual appeal goes with it. The lotus. Lotus is a very good example of macrophyte. Periphyte, submerged. Is that comfortable? Because based on the lifestyle, we demarcate habitat of aquatic ecosystem. और habitat of aquatic ecosystem कैसे बनेगा? हम शुरू कर रहे हैं 4000 मीटर से और उसी को enlarge करते चले जाएंगे. So this is my 4000 meters of depth.
which is the average depth of ocean water. And this is my mean sea level, Based on this term benthos, we demarcate aquatic habitat. I'm enlarging it as on bottom and off bottom. What is off bottom is called pelagic, and what is on bottom is called benthic. Benthic term कहाँ से आ रहा है? बेंथिक टर्म आ रहा है बेंथोस से। मतलब आप मीन सी लेवल से 4000 मीटर तक के डेप्थ तक पिलाजिक हो सकते हो, because only what is on the bottom, attached on the bottom, will be called benthic. हैंड रेज कर दीजिए। ऑन द बॉटम अटैच्ड इज बेंथिक, फ्रॉम वेयर द नेम इज कमिंग, बेंथोस। और जो 4000 मीटर से लेकर मीन सी लेवल तक रहेगा उन सबको आप पिलाजिक बोलोगे। सफिशिएंट हुआ ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आया कैसे डिमार्केट आउट करेंगे। तो इसको एनलार्ज करना है। एनलार्ज करने से पहले रिपीट करें, बहुत ध्यान से सुन लो क्या बता रहे हैं। अगर हम इंडियन लैंड मास को पिकअप करें और कहें इंडियन लैंड हैबिटेट, तो आई से लैंड हैबिटेट इज ऑलवेज 2 डायमेंशनल। भाई इंडिया को हमने कैसे जज किया था? 8 डिग्रीज से 37 डिग्रीज, 68 डिग्रीज से 97 डिग्रीज, ऐसे ही किया था ना। हम अपने आप को लैंड हैबिटेट को हमेशा 2 डायमेंशन लेकर चलते हैं, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल। हाइट जहां पर कोई माउंटेन है तो हिमालयाज है तो वहां पर आप 3rd डायमेंशन ऐड करोगे। बट जब भी कोई वाटर बॉडी को आप देखें, अटलांटिक ओशन को आप देखो, अटलांटिक ओशन एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 डिग्रीज नॉर्थ टू 50 डिग्रीज साउथ, तो लैटिट्यूडनल हो गया। अटलांटिक ओशन एक्सटेंड्स फ्रॉम अमेरिकास टू यूरोप एंड अफ्रीका, तो रीजनल हो गया। अटलांटिक ओशन हैज गॉट डेप्थ ऑफ 4000 मीटर्स टू डेप्थ, हो गया। यस और नो? तो एक्वाटिक इकोसिस्टम तो हमेशा ही 3 डायमेंशनल हो जाएगा। जब एक्वाटिक इकोसिस्टम 3 डायमेंशनल होगा तो उसके 3 डायमेंशन हैबिटेट भी तो होंगे। उस 3 डायमेंशनल हैबिटेट को हम कैसे लर्न करते हैं? लैटिट्यूडनली डाइवर्सिटी हैज टू डिक्रीज, margins are more productive than open water, total production definitely will be more in open water, size का कोई comparison ही नहीं है, but margins incorporate neritic and upwelling. Neritic are continental shelf. Neritic habitat is considered to be most diverse margin because it additionally provides safe breeding, and depth is a new dimension for us, so we are trying to learn it. So to learn depth, number one thing that we have learned is that aquatic lifestyle is 3 types: planktonic, the drifters; nectonic, the swimmers; and benthos, the attached. Benthos is the source of the name, benthic. So based on lifestyle, I can divide the depth of aquatic habitat into 2. Benthic on the bottom, pelagic off the bottom. Give me go ahead. Doesn't suffice. मुझे नहीं समझ में आया। मीन सी लेवल से लेकर 4000 मीटर तक तो आपका पिलाजिक ही चल रहा है, तो उसमें हम किस तरह से डिस्टिंक्शन क्रिएट करेंगे? उस डिस्टिंक्शन को क्रिएट करने के लिए बहुत ध्यान से अब इसको देखो। हैबिटेट बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल डू नॉट गिव मी द सफिशिएंट फैक्टर. So in the depth element, to understand habitat, we take reference of sunlight, and as soon as I take reference of sunlight, I distinguish my aquatic habitat vertically is not deeper than 200 meters. Dysphotic can be up to 1200 meters. Aphotic has to be 4000 meters. अब फोटिक का क्या मतलब होता है? सनलिट. अफोटिक का क्या मतलब होता है? डार्क. Please recall, sun rays do penetrates, but its penetration cannot be more than 500 meters deep. जल्दी से hand raise करो. Photic, sunlit. Aphotic, dark. तो ये dysphotic क्या है? Dysphotic वो होगा जहां seasonal sunlit होगा. During the summers, sun rays can penetrate to the deeper location. Hand raise. Lower latitude you can have deeper photic zone. तो dysphotic को आपने transitional रखा. फोटिक हमेशा सनलिट होता है, अफोटिक हमेशा डार्क होता है. कंफर्टेबल हो गए? कंफर्टेबल हो गए. अब जरा ध्यान से नोटिस करेंगे, जो एरिया सनलिट है वहां पर तो प्रोडक्शन भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, और जो डार्क है वहां तो सिर्फ रेस्पिरेशन होगा. डू आई साउंड करेक्ट सेइंग प्रोडक्शन डिक्रीजेस with increasing depth to become zero? Dysphotic respiration. आपको बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टडी को हैंडल कर रहे हैं तो ऐसे बनाते हैं. मान लो कि हम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं रेड,
तो प्रोडक्शन विल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ टू बिकम 0। ये मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। और अब हम बना लेते हैं रेस्पिरेशन। ये मेरा रेस्पिरेशन को कुछ ना होना, क्योंकि लाइफ एग्जिस्ट इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्ट। तो आप नोटिस कर रहे हो कि डिक्रीजिंग प्रोडक्शन and increase static respiration is marking up its compensation somewhere in despotic zone। despotic zone का तो डेप्थ वेरिएबल होता रहेगा, समर्स में डीपर हो सकता है, विंटर्स में शैलोअर हो सकता है। यस नो बताओ। अब यहाँ पर हम टर्म्स को एड ऑन करेंगे, तो ध्यान से सुनते जाए। विद डिस्पोटिक जोन दैट द स्पेस वेयर रेस्पिरेशन इक्वल्स प्रोडक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल डेप्थ। Respiration is independent of them. Microorganisms in the deeper location are based on the dead remains of organisms in the photic area. They are adapted to darker environmental conditions, and that is the reason they survive there. Some of the downwelling facilitates the movement of some of the dissolved nutrient and oxygen also to that level. Critical depth is the depth where decreasing production and static respiration balances with each other। मेरा ये यहाँ पर बन रहा है, हैंड रेज कर दो। क्रिटिकल डेप्थ स्टैटिक नहीं होता, सीजनली फ्लक्चुएट करता है। क्रिटिकल डेप्थ विल बी राइट देयर इन डिस्पोटिक जोन, ठीक है। अच्छा, क्रिटिकल डेप्थ जो सीजनली फ्लक्चुएट करता है, उसके साथ एक और टर्म अप्लाइड होता है, उसको भी जज कर लेते हैं। इट इज कॉल्ड एक्वाटिक ब्लूम। एक्वाटिक ब्लूम जो है वो नेचुरल यूट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन आप सब जानते हो। यूट्रोफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी मैन मेड चैलेंज टू द नेचुरल इकोसिस्टम। एक्वाटिक ब्लूम इज अ नेचुरल यूट्रोफिकेशन। एक्वाटिक ब्लूम को आप एक्वाटिक स्प्रिंग भी बोल सकते हो। अब एक्वाटिक स्प्रिंग को समझने के लिए ध्यान से विजुअलाइज करना। विजुअलाइज क्या करना है, नोटिस करो। I just want to make very different colors so that it becomes evident for all of us to see. विंटर्स में मेरा क्रिटिकल डेप्थ यहाँ पर होगा, ये विंटर में मेरा क्रिटिकल डेप्थ शैलो हो जाएगा। तो जो ये सारा एरिया है यहाँ पर थ्रू आउट द विंटर्स न्यूट्रिएंट विल रिमेन अनयूटिलाइज, ठीक है। अब सीजन साइकिल को रिकॉल करो। जब आप विंटर से समर्स में जा रहे हो तो कौन सा सीजन आता है, स्प्रिंग आता है ना। तो जैसे विंटर से समर आना शुरू होगा, क्या होना शुरू हो जाएगा, विंटर से समर आने पर क्या होना शुरू होगा, विंटर से समर आने पर ये सन रेज जो है पेनिट्रेट होना शुरू होगा और वो यहां तक आ जाएगा। तो ये जो अनयूटिलाइज न्यूट्रिएंट है, क्या ये एक्वाटिक ब्लूम ट्रिगर कर पाएंगे? हैंड रेज कर दो। एक्वाटिक ब्लूम टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग कौन सा सीजन होता है? इट इज अ ट्रांजिशनल सीजन फ्रॉम विंटर्स टू समर। समर से विंटर में नहीं होगा एक्वाटिक ब्लूम। और कौन सा लाइफस्टाइल है जो इसको इस्तेमाल कर पाएगा? प्लैंक्टोनिक, क्योंकि प्लैंक्टोनिक ड्रिफ्टर्स है ना, अटैच थोड़ी है। जो चीज रूटेड होगी वो थोड़ी ना ऊपर नीचे कर पाएगी। ऊपर नीचे तो वही कर पाएगी जो ड्रिफ्टर्स हैं। पाया खतरनाक काम, बहुत ध्यान से सुनना। इस वाले डायग्राम को रखते हैं, अब इसको रिमूव कर दे। बेंथिक था ऑन द बॉटम और हेडल हो जाएगा मोर देन द बॉटम, बाद में लिखते हैं। अब कैटेगरीज बना रहे हैं, नोटिस करते जाएंगे बहुत ध्यान से। पेलाजिक में मेरा पहला कैटेगरी आता है एपीपेलाजिक, दूसरा कैटेगरी आता है मेसोपेलाजिक, तीसरा कैटेगरी आता है बैथीपेलाजिक, चौथा कैटेगरी आता है, पर्पसफुली यहां पर ले जाएंगे। अब इनको यहां पर एडजस्ट करेंगे। Why? Carefully. Epipelagic less than 200 meters, mesopelagic 1200 meters, bathypelagic 4000 meters, benthic at 4000 meters, abyssal pelagic more than 4000 meters, heddle at more than 4000 meters. हेडल मतलब क्या हो गया? आई होप यू विल रिकॉल फ्रैक्चर जोन्स एंड ट्रेंचेस। बेंथिक क्या हो गया? डीप सी प्लेन।
Come on class, I want a confident go ahead. तो जल्दी जल्दी बता दो भाई। हम जब एक्वाटिक इकोसिस्टम में डेप्थ बढ़ाएंगे तो एपीपेलाजिक हो गया सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और डाइवर्स, और हेडल हो गया सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव एंड डाइवर्स। लॉजिक हो गया ना। और दूसरी चीज नोटिस कर लो, आपने जो लॉजिक के साथ स्टडी पिकअप किया ये हमेशा फोटिक है, ये डिस्फोटिक है। मतलब कभी आप इसको फोटिक में काउंट कर लो, कभी आप इसको डिस्फोटिक में काउंट कर लो। आप करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे। बैथीपेलाजिक, बेंथिक, अबसल पेलाजिक एंड हेडल। जानबूझ के इस सीक्वेंस में लिखा है बैथीपेलाजिक ऑफ द बॉटम, बेंथिक ऑन द बॉटम, अबसल पेलाजिक डीपर देन बेंथिक एंड हेडल फ्रैक्चर जोन। ये कौन से हो गए? अफोटिक। हैंड रेस कर दीजिए। तो यहां तो होगा सिर्फ रेस्पिरेशन, फोटिक में होगा रेस्पिरेशन प्रोडक्शन दोनों। तो फोटिक में क्या क्या हो जाएंगे? पेरीफाइट भी हो जाएगा, मैक्रोफाइट भी हो जाएगा, नेक्टॉन्स भी हो जाएगा, जूओप्लैंक्टन भी होगा, फाइटोप्लैंक्टन भी होगा। पर जब आप अफोटिक में आ गए, जहां बैथीपेलाजिक है, बेंथिक है, अबसल पेलाजिक है, हेडल है, वहां पर क्या होगा? खाली नेक्टॉन्स ही तो होंगे या बेंथोस होंगे, फोटोट्रॉप्स थोड़ी होंगे। आई बात समझ में कि नहीं? इसको बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रेटा ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। और वर्टिकल स्ट्रेटा ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम को समझने का एक लास्ट पॉइंटर, उसके बाद ही छोड़ेंगे। तो वो लास्ट पॉइंटर क्या है? क्या करते हैं, इसी पॉइंट पर यहीं पर ही लिख देते हैं। आई थिंक दैट विल बी मच इजियर थिंग फॉर अस टू डू। सो व्हाट वी डू इज वी टेक आउट रेफरेंस ऑफ बेंथिक। आप बेंथिक के साथ एसोसिएट कर सकते हैं और आप हेडल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो उसी के कंटिन्यूटी में अबसल प्लेन के साथ, अबसल पेलाजिक के साथ भी हो सकता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, याद आ गया? हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो हैं ये वो वेंट्स हैं जहां से मोर देन 250 डिग्रीज सेल्सियस हॉट वाटर इजेक्ट होता है। मैग्मा इजेक्ट नहीं होता, हॉट वाटर इजेक्ट होता है। माने आपने जो हॉटस्पॉट वोल्केनो पढ़ा था वो माल्टल प्ल्यूम था, जहां से मैग्मा बाहर आ रहा है। मैग्मा बाहर आएगा तो हैबिटेट नहीं। पर आई द डीप ओशन फ्लोर somewhere connected to the warmer interiors where I'm coming into the influence of that warmer interiors and this is warming up my water. So hydrothermal vents में बहुत high water temperature होता है और sulfur rich water होता है। इतना सल्फर होता है कि आप इसको ब्लैक स्मोकर्स भी बोलते हैं। So hydrothermal vents, which is extreme high temperature and sulfur rich black smokers, actually creates an additional habitat in the deeper location of aquatic ecosystem. इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं केमोसिंथेसिस जोन। याद आ गया? worms and calms capable of producing their food, energy and matter in the high water temperature, rich in sulfur, self-feeds but don't feed hetero. Hydrothermal vents are the additional aquatic habitat. Rare to found, very recently recognized, but it is there. कहाँ एडजस्ट कर सकते हो? हेडल में, अबसल पेलाजिक में और बेंथिक में। Aquatic ecosystem, the three-dimensional ecosystem, when is applied with the depth, you need to understand that with depth you have to understand photic, dysphotic and aphotic zone. Photic will be epipelagic, dysphotic will be mesopelagic, aphotic will be bathypelagic, benthic, abyssal pelagic and heddal. It is with heddal, abyssal pelagic and benthic that I can have possible existence of hydrothermal vents. Hydrothermal vents are the location of chemosynthesis. Chemosynthesis don't require sunlight, but chemosynthesis facilitates chemotroph to produce food, energy and matter. Done हो गया? अब एक final pointer, उसके बाद फिर एप्लीकेशन पर डालना शुरू करेंगे। अब इससे आसान तरीके से हम आपको टर्म्स नहीं समझा सकते। फोटिक और अफोटिक अम्ब्रेला टर्म्स हैं, इसलिए हमने इसी के बेसिस पर अपनी स्टडी की है। पर जब हम लिमिनेटिक एंड प्रोफंडल की बात करते हैं तो ये फ्रेश वाटर के ले जाता है। मतलब आई कैन राइट दैट माय लोनार लेक
is photic and aphotic, है ना? तो photic aphotic umbrella term है, वो fresh के साथ जाएगा, saline सब के साथ जाएगा, लेकिन limnetic and profundal जाता है सिर्फ fresh water के साथ. And epilimnion, hypolimnion और बीच में हम metalimnion मतलब something which is related to intermediate level demarcate करते हैं, ये light के साथ जाता है. Epilimnion photic, हाइपोलिम्नियन अफोटिक, ये लाइट के साथ जाता है. ये सब सिनोनिमस टर्म है जो आपकी नॉलेज में होना चाहिए. ये भी क्लियर हो गया. एंड फाइनल थिंग फॉर टुडे, एज आई सेड फ्रेश वाटर, आई मस्ट ऐड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को लोटिक और लेंटिक बोलते हैं. लोटिक का मतलब होता है रनिंग वाटर, रिवर, और लेंटिक का मतलब होता है स्टैंडिंग वाटर, लेक, पॉन्ड, रेजर्वॉयर. फ्रेश वाटर लार्जली लेस प्रोडक्टिव होता है कंपेयर्ड टू द मरीन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास न्यूट्रिएंट कम है. फ्रेश वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स नहीं होंगे ना. तो जो लोटिक हैबिटेट होता है वो रनिंग हैबिटेट होता है, रनिंग वाटर, रिवर्स. रिवर इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, लोटिक. लेक, पॉन्ड, रेजर्वॉयर्स को क्या बोलोगे, लेंटिक. एंड एक जनरल कंपैरिजन में लोटिक, लेंटिक, जिसके साथ आप लिमिनेटिक, प्रोफंडल, एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन एंड हाइपोलिम्नियन टर्म्स का इस्तेमाल करते हो, वो मरीन के मुकाबले में लेस प्रोडक्टिव होता है.